Good morning, students. Today I am here with a new topic, contraception. Before I will start this one topic, I just want to recall one more thing which we discussed in our previous video, population explosion. As I mentioned you earlier that the population of India was approximately 36 crore at the time of the independence. While today if we will check our population, it is about 130 crores. So it is increasing very rapidly or very dramatically, and there are various reasons. And how to control, we discussed in the previous video that we should have to go for the awareness program, and we have to aware peoples for the small families, and we discussed about the various things. But except it, there is one more very effective method for the birth control or for the controlling of the population explosion, and this is called contraception. Now, what is contraception? I am going to tell you that contraception aims to control birth by using contraceptives. It means in contraception method we have to use various types of contraceptives which are used to check the birth rate or which are used to control birth rate. Okay, prevention of contraception or fertilization of ovum during sexual intercourse is called contraception. Okay, so as we know that as an end product of the sexual reproduction, when copulation takes place or after copulation, definitely the female will conceive a baby. Means the fertilization of ovum will take place during the intercourse, and which will lead to the implantation and finally the development of the fetus inside the mother's womb. So while a couple uses different contraceptive methods, it can prevent conception of fertilization of ovum. Okay. Now an ideal contraceptive must have some properties, and what are these properties? Initially I am going to tell you. Sometimes the question comes in the exams also, what are the properties of an ideal contraceptive? So I want to explain these properties or these characteristics of an ideal contraceptive. Initially, the first one, the contraceptive must be user friendly, means the person who is using it, he or she can handle it very easily. Okay. Second thing, it should be easily available in the market. Third thing, it should be effective, means while we are using contraceptive, the chances of the failure should be less, and it might be reversible, means we have to use it again and again. Okay, its properties are should be like it that we should use it again and again, or it means reversible. While I mean to say that while once we are using it, it doesn't mean that the person becomes infertile with the use of this kind of contraceptive. Or the last one, it should be least it should have least side effects, means there should not be any kind of side effect in the body while we are using contraceptives. So there are four or five characteristics. The first one, it should be user friendly. The second one, it should be easily available in the market. Third one, it should be effective. And fourth one, fifth one, it should be reversible, means there will be no chance of because of it there will be no chance of having infertility kind of symptoms. And last one, it should have least side effects. Okay. Now, what are the different methods or what are the different types of contraceptives which we can use, we are going to discuss today. The first one is natural contraceptive, which are also called as traditional contraceptive methods. The second one are called barrier methods. Third ones are called intrauterine devices, IUDs. Fourth one are oral contraceptives. Fifth ones are injections or implants, and the last ones are called as surgical methods. Now one by one I will explain these different methods. The first method is natural method. Okay, and it works on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting, means uh, when will fertilization occur? If the male gamete will fuse with the female gamete, then only the chances of the fertilization are there. Okay, if we will prevent the fusion of male and female gamete, how can we prevent it? By meeting of both of them.
अगर हम स्पर्म को ओवम से मिलने ही नहीं देंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. So for it we can use different kinds of natural methods. I am going to discuss three different natural methods with you. The first one natural method is called periodic abstinence. Okay, what is periodic abstinence? I am going to explain. Since we know that about the uh, all four phases of the menstrual cycle, and we know that in which phase ovulation takes place, definitely in the ovulatory phase, and this phase, the chances of this phase are in between 10th to 17th day of the menstrual cycle. मीन्स 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच में चांस ज़्यादा है कि ओवल्यूशन होगा. जब ओवल्यूशन होगा तभी जा कर के तो ओवम के साथ स्पर्म फर्टिलाइज होगा. ठीक है. इफ़ अ कपल प्रिवेंट्स कॉपुलेशन और सेक्स during the 10th to 17th day of the menstrual cycle, then the chances of the pregnancy are very rare. ठीक है. So we can say that it is a method which couple avoid or abstain coitus means sex from day 10 to day 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. This is called periodic abstinence. If a female has a proper knowledge about her periods or menstrual cycle, so in between the 10th to 17th day, if they are preventing coitus or sex, they can avoid pregnancy. Okay, second method is called withdrawal or coitus interruptus. Withdrawal method, as name is suggesting, or coitus interruptus, the name is self-explaining, means the coitus must be interrupted or the sex must be interrupted. Okay, in this method, the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation to avoid insemination. It means when during the time of the coitus, just before the insemination, means the time duration when a male is about to release his sperm into the female's reproductive tract should have to withdraw his penis from the female's vagina. ठीक है. And if the sperm will not be ejaculated inside the female reproductive tract, so there will be no chance of pregnancy, or it can control birth or undesirable birth. ठीक है. Now the third one method is called as lactational amenorrhea. Okay, what is lactational amenorrhea? It is based on the fact that the ovulation or the menstrual cycle is absent during the intense lactation following parturition. I mean to say that after the parturition, the menstrual cycle do not occur for at least the period of the 6 month. It may be variable in different females, but I am telling you the average span इन आफ्टर पार्टुलेशन, यानी कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद के 6 महीने तक ओवल्यूशन या मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखा गया फीमेल्स में. इफ द मेस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट अकर, डेफिनेटली द ओवल्यूशन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. So if unprotected sex is going to take place, then there are less chances of the pregnancy in that particular time period. ठीक है. And this method is effective for 6 months, and the chances of the side effects are nil. Okay, I am going to tell you one more thing, that the chances of the side effect in all cases in the natural methods are nil. ठीक है. But in natural method, the chances of failure of contraception contraception are very higher. ठीक है. So these are the three different methods which are included in the natural method: periodic abstinence, withdrawal or coitus interruptus, and the third one is lactational amenorrhea. ठीक है. Actually these are the three different natural methods. Now I am coming to the second method, which is called physical contraceptive or barrier methods. Now these method prevent contact of sperm and ovum by barriers. So these are also preventing the meeting of the sperm and the ovum, but for it we are using different barriers. ठीक है. Which barriers are making a kind of obstruction which are preventing the entry of the sperm into the uterus or into the female reproductive tract. ठीक है. For it we have to use different kind of things, and these things can be used by both. These are available for both male as well as female. The first ones which I want to discuss with you are condoms. Okay, condom are the barriers which are basically made up of thin rubber latex sheath, and these are self inserted or disposed. तो ये जो condoms होते हैं ये बेसिकली बैरियर के अंदर आते हैं, एंड ये रबर या लेटेक्स के बने हुए होते हैं, एंड सेल्फ इंसर्टेड मीन्स मेल और फीमेल इसको खुद इंसर्ट कर सकते हैं, और ये डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज़ करके इनको डिस्पोज किया जा सकता है. ठीक है. इन केस ऑफ द मेल इट कवर्स पेनिस, and in case of the female it covers cervix and vagina of the
फीमेल, ठीक है। इट इज़ यूज सो दैट द सीमेन डू नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इनका यूज़ इसलिए किया जाता है बिकॉज ये जो सीमेन सीमेन यू नो वेरी वेल दैट द स्पर्म अलॉन्ग विद द सेमिनल प्लाज्मा इज कॉल्ड एज सीमेन। तो ये सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की एंट्री में एंटर करने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नाउ दीज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव बिकॉज दे प्रिवेंट एसटीडीज ऑल्सो। ये एसटीडीज से भी क्या करते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक एड्स और अदर एसटीडीज इसकी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्डोम्स को, तो दिस कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एसटीडीज ऑल्सो। नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर्स आर कॉल्ड एज डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स। तो डायफ्राम है, सर्विकल कैप्स हैं, एंड वॉल्ट्स जो हैं ये रबर या लेटेक्स के बने हुए होते हैं। एंड दीज कैन बी यूज बाय ओनली फीमेल, इनको केवल फीमेल यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। एंड दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बेसिकली सर्विक्स वाले रीजन पे इनको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड दीज ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस थ्रू सर्विक्स, ठीक है। एंड दे वन मोर थिंग, दे आर रीयूजेबल, इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। And along with them we have to use spermicidal creams. In such kind of creams, jellies, foams we can use which can kill sperm also, ठीक है। Now very quickly I am going to very the third one method. These are called IUDs, intrauterine devices, ठीक है। and these devices are also used by only female, and these are inserted inside the uterus थ्रू वजीना, यानी वजीना से होते हुए इनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। एंड इसके लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली डॉक्टर्स कैन डू इट, ठीक है। एट योर होम यू कांट यूज़ दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बाय योर ओन, ठीक है। ये तीन तरह की आईयूडीज़ देखी गई हैं बेसिकली, ये तीन तरह की आईयूडीज़ होती हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ होती हैं पहली, दूसरी होती हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, और तीसरी होती हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो होती हैं बेसिकली इनके अंदर आते हैं लिप्स लूप, इनको बोला जाता है LIPPES लूप, लिप्स लूप इसका एग्जाम्पल है। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। नाउ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी फॉरेन एजेंट को इनगल्फ करके, डाइजेस्ट करके फिनिश कर देना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लिप्स लूप जो है वो फैगोसाइटोसिस कर देती हैं स्पर्म को, यानी उसको डाइजेस्ट कर देती हैं, उसको इनगल्फ करके। नाउ द सेकंड जो होती हैं वो होती हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। इनके एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा, कॉपर टी इज़ द वेरी कॉमन वन, CU7 मल्टीलोड 375। दीज थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। एंड इनको कॉपर रिलीजिंग है तो जाहिर सी बात है ये CU आयंस को यानी कॉपर आयंस को ये रिलीज़ करेंगी। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन, ये स्पर्म की मोटेलिटी को ख़त्म कर देता है, यानी स्पर्म बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, तो उसकी मोटिलिटी को ख़त्म कर देता है, तो जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ कॉपर रिलीजिंग आपकी जो आयोडीज हैं, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, यानी ये यूट्रस के अंदर स्पर्म की फैगोसाइटोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट वन, थर्ड वन, okay, these are called hormone releasing IUDs like progesterate or LNG20। बेटा you must have to remember their name terms also because sometimes in the exam नेम पूछा जाता है किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपके प्रोजेस्ट्रेट है और LNG20 है, मल्टीलोड 375 आपको याद रखना कहाँ है, दिस इज़ फॉर कॉपर रिलीजिंग, एंड LNG20 इज़ फॉर हार्मोन रिलीजिंग IUD, और इसके साथ प्रोजेस्ट्रेट है, ठीक है। दीज मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। कि एक्चुअल में ये करते क्या है, यूट्रस का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसे अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि फाइनली इम्प्लांटेशन का होना है यूट्रस में होना है। तो हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे, प्रोजेस्टेरोन को बेसिकली रिलीज़ करते हैं, और एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेट भी इसको बोलते हैं, उनको रिलीज़ करते हैं। तो जो कि यूट्रस के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है इसे अनसूटेबल बना देते हैं। वहीं फीमेल की जो प्रेगनेंसी है इसे डिले कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा समटाइम्स दे ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ द म्यूकस इनसाइड द सर्विक्स, जिससे कि जो स्पर्म की हॉस्टिलिटी है, यानी स्पर्म के लिए जो सूटेबल कंडीशंस हैं वो नहीं मिल पाती, तो वो सर्विक्स से अंदर एंटर ही नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड दीज आर द वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स इन इंडिया, ठीक है। एंड द थर्ड वन, द फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल मेथड, देन वी डिस्कस्ड अबाउट बैरियर मेथड, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द आईयूडीज। नाउ I am going to discuss about the oral contraceptives. Now oral contraceptives are basically
a combination of either these are the combination of progesterone or estrogen, or singly we have to use small doses of the progesterone. ठीक है, तो फीमेल इनको लेती है एंड सी टेक्स देम इनटू द फॉर्म ऑफ पिल्स, यानी पिल्स यानी मेडिसिन्स के तौर पे टैबलेट्स की फॉर्म में इनको लिया जाता है। इनको सपोज फ्रॉम टुडे द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ गोइंग टू बिगिन, तो आज से लेकर के 21 डेज तक इनको रेगुलर लिया जाएगा। 7 डेज़ का ब्रेक किया जाएगा, देन 21 डेज़ के लिए लिया जाएगा। नाउ जैसे मालाडी इज़ द एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। आजकल एक नई आपकी CDRI लखनऊ ने एक और बनाई थी। यस, इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द सहेली। सहेली भी एक आपका इफेक्टिव क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, बट इट शुड हैव टू यूज़ वंस इन अ वीक। इसको हफ्ते में केवल एक ही बार लिया जाता है एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव बिकॉज दीज इनहिबिट ओवोल्यूशन। ये ओवोल्यूशन की प्रोसेस को डिले कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, यूट्रस को कम अनसूटेबल बना देती हैं कम्प्लीटली इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और सर्विक्स के अंदर म्यूकस की क्वांटिटी को चेंज कर देती हैं, जिससे कि स्पर्म की एंट्री पहले तो सर्विक्स से अंदर ही नहीं होगी, और यूट्रस में अगर तक पहुंचता भी है तो ओवोल्यूशन नहीं हो रहा, यूट्रस सॉरी फैलोपियन ट्यूब तक अगर पहुंचता भी है तो ओवोल्यूशन हो नहीं रहा। ओवोल्यूशन होगा, हो भी जाता है बाय द वे, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता तो यूट्रस की कंडीशन आपकी इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, नाउ दीज आर द सम कॉमन पिक्चर्स ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दिस वन इज द फर्स्ट वन यू आर ऑब्जर्विंग मालाडी एंड द सेकेंड वन इज सहेली। ठीक है, नाउ आप accept it the next method of prevention of population explosion, or we can say child control, birth control, we can use injection or implants। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन along with the combination with estrogen are used in injection or implants। एक्चुअल में क्या किया जाता है, इन द सेकेंड वन फिगर यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, स्किन के अंदर इसे रख दिया जाता है या इंजेक्शन इसके दे दिए जाते हैं। ठीक है, और इनका एक्शन बिल्कुल सिमिलर है लाइक पिल्स। ठीक है, और दीज आर इफेक्टिव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ time। If a lady wants some gap between two children, then the implants can be used along with the IUDs। ठीक है, and progesterone or combination of progesterone and estrogen IUDs can be given in this method। and except it the last one method which I want to discuss with you, these are the emergency contraceptives। these methods are used within the 72 hours of the coitus। आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे कि IPL अनवांटेड 72, दीज आर सम कॉमन एड्स टुडे नाउअडेज। तो इसमें कैजुअल या अनप्रोटेक्टेड अगर कोइटस हो जाता है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है या कोई रेप का विक्टिम है तो उसको ये दिया जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद विद इन अगर 72 आवर्स ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का के एडमिनिस्ट्रेशन को एक पिल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और वो आपको फीमेल अगर इसको लेती है तो इट कैन कॉज miscarriage, or we can say that it can make the inhostile the condition of the uterus and it protects the pregnancy। ठीक है, except it the last one and the very important method, this is called surgical method। ठीक है, and this makes the sterile either to the male or the female। it is also called sterilization method, advised to male as well as female partner to prevent any future pregnancy। ठीक है, now what happens in it you can easily observe in the figure। it blocks gamete transport thus prevent conception। तो इसमें गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन को ही बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, जिसकी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी मदद से कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। स्टेलाइजेशन इज मेड अप इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। इन द फर्स्ट वन फिगर यू कैन सी दैट हेयर जो वाज यहाँ स्क्रॉटम से थोड़ा सा इंसीजन करा जाता है और जो वाज डिफरेंस है इसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब वाज डिफरेंस ही नहीं रहेगी तो टेस्टिस से रिलीज होने वाला वो जो स्पर्म है वो आपका रिलीज ही नहीं होगा, तो इससे सीधे सीधे क्या होगा, आपका चाइल्ड कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। एंड इन फीमेल इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी। हेयर यू आर ऑब्जर्विंग जो फेलोपियन ट्यूब है इसको थ्रू द वजीनल ट्रैक और एब्डोमेन में या तो इंसिजन करके सीधे फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे कि ओवम के रिलीज को प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड इन विच इज अप्लाइड इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल एंड द वैसेक्टोमी इज अ मेथड विच इज अप्लाइड इन केस ऑफ मेल, and these are very highly effective methods। but one drawback of this method is they are very poorly reversible, means once they have done then the after that most of the cases in the male and the female become sterile। ठीक है, except it there is a final method which is called MTP। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज़ इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है,
and it is also called as in common terms abortion. ठीक है, ठीक है. And it is intentionally or voluntary action after unprotected sex. If the fertilization takes place and implantation takes place, then the people can go for the MTP. But it is legally banned in most of the countries in the world. But it is in after 1971 it is within with very strict guidelines. Now it is applicable in India, but we should have to check that we should have to know not go for female feticide, because actually what happened, initially the people started to after with the help of the amniocentesis they check the gender of the developing fetus, either he is male or she is female, and then they go for the female feticide with the help of the MTP. But nowadays we can you can easily see at the entry door of any hospital that abortion is completely banned. ठीक है. और you can easily observe that before the childbirth the identification of gender is punishable offense. So there are strict laws behind it in India, and it was implicated in India after 1971. ठीक है. MTP is basically used to get rid from the unwanted pregnancy due to the unprotected intercourse. बेसिकली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो जाए तो इसका यूज़ किया जाता है. एक्सेप्ट इट फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्शन. कभी कभी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, उनका फेलियर हो जाता है, तो तब भी हमें इसका यूज़ करना पड़ सकता है. रेप की जो विक्टिम फीमेल हैं वो इसका यूज़ करती हैं. प्रेगनेंसी विच में फेटल और मदर और फीटस बोथ. ठीक है. कभी कभार क्या होता है जब प्रेगनेंसी के बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता लगता है कि यार जो फीटस का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर नहीं है, और डिलीवरी के टाइम पे या आफ्टर डिलीवरी उसकी डेथ हो सकती है, या एबनॉर्मल हो सकता है, या मदर जो है उसकी डेथ हो सकती है. देन इसका MTP को यूज़ किया जाता है. एंड बेसिकली MTP इज़ सेफ़र इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. यानी प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर की होती है, तो फर्स्ट 3 मंथ में जो MTP है इट इज़ सेफ. In the second and third trimester it is very heavier, and doctor will never advise to go for MTP. ठीक है. इलीगल और अनक्वालिफाइड क्वैक्स अनसेफ फेटल अवॉइडेड बाय काउंसलिंग. तो आपको यू मस्ट हैव टू एज बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने अवेयर करना है कि कभी भी एमनोसिंथेसिस के लिए ना जाएं, कभी भी फीमेल फेटिसाइड के लिए ना जाएं. इट इज़ वेरी फेटल एंड यू मस्ट हैव टू काउंसिल अदर पीपल्स ऑल्सो. ठीक है. Any if you have any doubt, then you can ask me through the comment box section, or you can directly ask question through phone call or WhatsApp group. ठीक है. Thank you for today. Bye.